Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Chapter number 7, Triangles. Let us have a look at some important questions. First question is, in the figure, AC is equal to BC, angle DCA is equal to angle ECB and angle DBC is equal to angle EAC. ये चीजें आपको given है and you have to prove that the triangle DBC and EAC are congruent. ये दोनों triangles congruent है, ये हमें prove करना है. Hence DC is equal to EC and BD is equal to A. ये तीन चीजें हमें प्रूव करनी है. लेट अस हैव अ लुक एट द सोल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ चीजें जो गिवन है वो है DAC एंड ECB दे आर इक्वल, सो वी विल राइट एंगल DCA is equal to angle ECB. It is given to us in the question. The first thing that is given is this. अब इससे हम ये कह सकते हैं that angle DCA plus angle DCE is equal to angle ECB plus angle DCE. What I have done is मैंने एंगल DCE को दोनों साइड पे ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी. सो DCA में DCE को ऐड किया, इट बिकेम एंगल DCA प्लस एंगल DCE एंड एंगल ECB में एंगल DCA को ऐड किया, सो इट बिकेम एंगल ECB प्लस एंगल DCE. फाइन. अब इन दोनों को ऐड करने पे हमें मिला एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल BCD. इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने. अब हमें दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था. So in triangle ECA, पहला triangle is ECA and the triangle DCB. इन दोनों triangle में हम consider करेंगे that angle ACE is equal to angle BCD. अभी हमने equation number 1 में ये same चीज को prove किया. Fine. So from 1 we can say that angle ACE is equal to angle BCD. Now next we have AC. The side AC is equal to the side BC of the from the figure. It is given to us that AC is equal to BC. क्वेश्चन में ये गिवन है हमें. नाउ नेक्स्ट थिंग, एंगल EAC इज इक्वल टू एंगल DBC. इट इज ऑल्सो गिवन टू अस इन द क्वेश्चन. सो ये तीन चीजें हो गई हमारे पास. इन तीन चीजों से हम ये कह सकते हैं दैट द कंक्लूजन दैट वी ड्रॉ फ्रॉम दीज थिंग्स वी हैव ट्रायंगल ECA is congruent to triangle DCB by the property ASA. Fine. ASA is the angle side angle congruence of the triangles. इससे हम ये कह सकते हैं that they are congruent. अब by CPCD we can say that EC is equal to DC and again by CPCD we can say that AE is equal to BD. यही सब चीजें हमें प्रूव करनी थी. Now hence all the things are proved.